अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ वी हैव गॉट अ वेरी अनदर वेरी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, और हम जो प्रोफेशनल केस स्टडीज़ भी आपके साथ लेकर आते हैं अलॉन्ग विद द बिजनेस केस स्टडीज़। सो वी हैव गॉट चीफ पीपल ऑफिसर ऑफ के इलेक्ट्रिक मिस्टर मोहम्मद रिजवान दालिया। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच आशिर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग क्योंकि हम लिंक्डइन को फॉलो करके जो है वो गेस्ट की सारा एक प्रिपेयर कर रहे होते हैं ख़ुद को, फ्रॉम बीइंग अ सीए देन टू द फाइनेंस सेक्टर, हम उसको देखते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद 10 साल तक आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया। ये अचानक एचआर की तरफ जो है वो किस तरीके से हुआ? हालात देख के आगे इकोनॉमी ऐसी हो जाएगी तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। सो इंटरेस्टिंग जर्नी है और not 10 years. In fact, after my articleship, I spent almost 16-17 years in finance, different roles, different functions. In fact, corporate affairs as well. So, and it is actually something that just happened. Yes, I was waiting for a move. Maybe not getting bored with the numbers, but getting bored with whatever I was doing then. And I was needing a change, and that came as a change. I took it up as a challenge. And it tested out my adaptability, flexibility, and given me a different perspective of life. I didn't knew that I like interacting with a lot of people. I didn't knew that I can manage diverse teams. I didn't knew that I can not only work with numbers but work with more and more people and difficult and diverse people. So something that happened unplanned. But at the end of the day, I started enjoying it, and I'm still enjoying it. हाँ, ग्रेट। तो सर ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि एचआर के अंदर ये जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये वाकई में एग्जिस्ट करता है या हर बंदा एचआर में काम कर सकता है? देखो, जो कनेक्टिंग पीपल वाला एक आपका एक थॉट प्रोसेस होता है पीछे। I personally feel के there is more myth around it. ये पर्सनैलिटीज़ तो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, बिल्कुल। और ये इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन तो बाद में इंसानों ने अपने ही बारे में क्रिएट किया है, जो स्टीरियोटाइपिंग कहूँगा मैं आज के ज़माने में, जो एक वर्ड मशहूर है। तो मेरा अपना ही ख्याल है कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, yes, people are different, but you need both qualities if you look at senior professionals, because even in HR आपको introversion to some extent चाहिए. So even if somebody is an extrovert and is in HR, but some part of his or her personality should be an introvert, because you need a thinking mind, you need strategy, you need analysis. So for that you need an introvert personality or some change in your behavior when you do. So even if you are an extrovert, कुछ चीज़ें आपको इंट्रोवर्ट वाली करनी पड़ेंगी, अदरवाइज यू विल नॉट मेक इट अ सक्सेस आउट ऑफ इट। अच्छा, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ ना, आई एम वेरी रेजिस्टेंट इसमें हूँ कि अपना मैं ना नहीं कर पाता। यू नो, आई हैव दिस स्मॉल सेटअप, सॉफ्टवेयर हाउस का, एक टेक्नोलॉजी कंपनी का। आई हैव फ्यू पीपल जो ऑफिस बॉय की तरह भी काम करें, आई जस्ट कांट से देम नो। तो ये जो पावर ऑफ नो है इन अ वेरी राइट वे, कि कभी कभी आपको वो नो बोलना पड़ता है जस्ट इन केस के आपको मेंटेन कर रहे हैं डेकोरम आपके पूरी कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। वो कितना ज़रूरी है एक नो आना फॉर एन एचआर, क्योंकि आई एम डीलिंग माई सेल्फ एचआर के अंदर ही भी सारे काम देख रहा होता हूँ खुद ही। तो उसको किस तरीके से नो का एक एलिमेंट आता है? सो नो वाली चीज़ भी है। आई पर्सनली फील के इट्स नॉट वेरी ब्लैक एंड वाइट। कहने को बड़ी आसान लगती है, बट it depends on the scenario, and it depends on what you are handling, what is on the table in front of you. Or in the last few years, what has happened is the world has moved towards servant leadership. So it is not always a good thing in my view to say no upfront. You have to choose. So and you have to look at the environment. And you have to analyze as well where to say no
at the first instance. So I personally feel that it's more judgmental, and there is no set criteria that you should learn about saying no. तो ऐसा भी नहीं हो जाए कि you are a personality who is always coming up with a no. So then it becomes difficult to survive in a corporate world. आपके हिसाब से who is the right person, right employee for any organization? Not according to his skills, obviously skill set जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा, but as a character, who is the right employee for you? एक चीज़ तो सबसे सुनने मिलती है, तो मैं भी कह देता हूँ सही. तो somebody with the right attitude. अच्छा. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार don't hire people, hire attitude. But in my view, this is half story. Attitude is how somebody thinks, how somebody take things. But picture जब complete होती है, जब उसमें आप behavior add करें, the actions. Yes. So most of the times we always hire people for attitude, but later point their behaviors are not desirable. So, and it's obviously an art in selecting the right people for the right job. But at the same point in time, जब आप evaluate करें लोगों को, so look out for evidences, not only in terms of attitude, but in terms of behavior as well. Okay. और उसमें फिर आपका assessment कैसे होता है to find out that right attitude? So there are 2-3 ways to do it. One is asking the right questions during the evaluations, which can lead you to something that how this person behaves in difficult situations. And on top, especially when you're hiring for senior positions, references and past experiences also count. Okay. That is also important. अच्छा, इसमें हमने देखा है कि एक चीज़ होती है DEI का कॉन्सेप्ट होता है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन. उसमें फिर एक चीज़ आती है इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी. नॉट एवरी पर्सन कैन गेट द पर्क्स जो एक हायर ऑफ एग्जीक्यूटिव हासिल कर सकता है, बट एवरी पर्सन इन एनी फील्ड, इन एनी डेजिग्नेशन, उसको भी हक है कि उसको एक इक्विटी के साथ जो है वो. तो हाउ डू यू मैनेज दैट इक्वालिटी, इक्विटी का ये जो DEI का कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से उसको करते हैं? So DEI में जो E part है, that has actually evolved over the past few years, and things have logically gone from equality to equity, because equal वाली चीज़ से still the disparities remain, and the organizations and the world in fact realize that equity is something to work for. Yes. अच्छा, वहाँ पे organization level पे the challenge, which is not only KE, but also other organizations that I have seen. The thing happening there is how you communicate those equity-related things. So only some kind of an announcement or a policy would not only serve, because people will still feel that we are not being treated equally, जो कि employee या colleague से related feeling है. But the real catch or success is in explaining it and communicating it. For example, in our company, we give caregiver allowance to females. We give transport allowance to females at some levels where they don't get a car as a benefit. So उसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये मर्द हज़रात को क्यों नहीं मिलना चाहिए. So when we go to our town halls, so we always explain that the transport system we have, unfortunately, is not something which is like we should be proud of as a Pakistani, and it is even more challenging for the females right now. Exactly. So from an equity perspective, we should spend or give the benefit where it is more required. So it is more about communicating it the right way, so that people get the gist of it, the logic of it, and people do not feel that they are not being treated
treated well or being treated unequally. वही इंग्लिश का बड़ा मशहूर जुमला है, मुझे अभी इंग्लिश में ठीक से अगर याद आ रहा है तो the equity is not giving everybody a shoe. Okay. It is giving everybody a shoe that fits as well. Yes, exactly. और before I ask, connect the next question. आपका जो एक इदारा है, that is not about the people sitting in the office, but also about the labor force that is working on the street. एंड रिसेंट टाइम्स के अंदर जब से हमने देखे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, पीपल आम आवाम जो है वो दे आर वेरी मच, वो एक एंगर का एक एलिमेंट है जो कि हमने रिसेंट पास में देखा है एम्प्लॉइज़ के साथ जो है वो बदतहज़ी भी की गई, विच आई थिंक शुड नॉट हैपन बिकॉज दोज आर नॉट द पीपल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी को, दे आर जस्ट द वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. कंसर्न भी होते हैं तो वो डायरेक्टली उनका एक राइट वे होता है जस्ट टू spread your message. तो वो how difficult it is to manage that equality और equity की जो एक चीज़ है उन लेबर तबके के अंदर जिनकी हालात आजकल वैसे ही बड़े ख़राब हैं, and in current situation how do you manage all these things? देखिए उस लेवल पे yes you have rightly pointed out that an employee or colleague is somebody who is doing his or her duty. Yes, exactly. उसका ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो से या ओवरऑल कंपनी पॉलिसी से वो ताल्लुक़ नहीं बनता, वो तो मेहनत से अपना काम कर रहा है. जी बिल्कुल. तो द रिस्पेक्ट एलिमेंट शुड रिमेन देयर. Yes. The social norms should prevail. और उस पर जितना भी पीछे सारी बातचीत हुई तो everybody is now more aware. और हमें काफ़ी support भी मिली social circle से कि whatever happened was not something right. In fact condemnable. और उस पर generally overall society ने भी condemn किया. law enforcement वालों ने action भी लिया. From a colleague or employee perspective, right now जो challenge है इकोनॉमी इस वक्त आपको पता है प्रेशर में है, inflation is skyrocketing. So उसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त फैक्टर है जिसके ऊपर सारी corporates इस वक्त challenge है is how to mitigate the impact of inflation. And especially for those who are at low suffering the skills. most. So उसमें I as a senior leadership member of KE cannot, खैर मैं ये तो claim नहीं कर सकता कि हमने हर मसला हल कर दिया होगा, but we have done a lot of efforts over the past few months. और उसमें जो मेजर एक एलिमेंट था वो कमिंग अप विद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट a few months back for all the cadres. और in terms of percentage we try to give more to the lower people, lower grade people, as compared to the ones who are earning higher pays. So that has gone well. But current scenario में जो इस वक्त inflation है और continuing है, वो ग्राफ नीचे ही नहीं आ रहा. So it's a ever growing challenge. And organization will have to continue to do these kind of efforts to keep our employees I would say safe from the impacts. Yes, impact हो रहा है और उसमें हम सब ने as individually भी एक दूसरे का ख्याल करना है और ख़ुद भी ख्याल रखना है. Whatever expenses we can curtail, but you cannot ask those people जिनकी तनख्वाह already कम है कि आप वो और they further cut down on their expenses. आजकल जो even minimum wage है उसके ऊपर भी एक डिस्कशन चल रही है और and rightly so that it's a minimum wage, it's not minimum livable wage. Okay. So एक डिस्कशन ये भी चल रही है और बड़ी pertinent है. But at the same point in time we will have to see how much organizations can bear. But the effort should be there and it should keep translating into actions. Okay. Employees को, colleagues को feel हो कि somebody is thinking about it and gradually after every some months or period something is happening to keep them away or mitigated from inflation. अच्छा, इसमें फिर along with that economic crisis जो है we have got a very
मैं कराची की बात करूं तो वी हैव गॉट अ वेरी टफ रूटीन, यू नो. ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा इशू है, यू नो. आपको अगर 8 घंटे की ड्यूटी देनी है तो 2 घंटे आपके ट्रैफिक में लग जाएंगे. फिर अगर आपके ज़्यादा काम बढ़ गया तो यू हैव टू स्पेंड लाइक अराउंड 12 आवर्स मिनिमम इन दिस वर्क प्रोसेस पूरा होता है. तो how that has affected the work life balance? आप कितनी भी कोशिश कर लो, इवन इफ आई हैव सीन सम कंपनीज के जिनमें पॉलिसीज आ गई हैं कि आप 4 दिन जो है वो ऑफिस आओ, 1-2 दिन आप घर से काम करो. बट अगेन दैट वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाना इस करंट सिनियरिटी के अंदर जब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. एक भले आप जो भी बोले लेकिन पैसा कहीं ना कहीं वो खुशी का एलिमेंट दे देता है आपको, सेटिस्फैक्शन किसी ना किसी तरीके से मिल जाती है. लेकिन अगेन वी डोंट हैव मनी, तो उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप किस तरीके से कर रहे होते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन? सो जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सट्रीमली ऑपरेशनल प्लस a very large number of people working in the field. From a work-life balance challenge perspective, impact not only जो field staff है उन पे भी हुआ है, but at the same time office staff पे भी हुआ है, जो office based हैं, mostly जो desktop workers हैं या white collar जिनको हम कहते हैं. अच्छा, अब इसमें जो analysis है हमारा, जो field jobs हैं they are mostly shift based. So from a company time perspective, there has not been any increase over the last many years. But yes, commute time has increased. And that is a challenge that corporates like us, जहाँ पे बहुत बड़ा feed force है, we have not been able to crack that code because you can keep the hours minimized. क्योंकि वो जो लेबर है या वो जो वर्कफोर्स है उसने एक ऑपरेशनल काम जो कि फिजिकल प्रेजेंस के बगैर पॉसिबल ही नहीं है होना, तो वो तो होना है, अदरवाइज योर कस्टमर्स आर गोइंग टू सफर. सो देयर वी आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट हम वर्कफोर्स में कमी ना करें. वी ट्राई टू मेंटेन द हेड काउंट्स एज वेल सो दैट जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए. बट द कम्यूट टाइम हैज़ डेफिनेटली इंक्रीज एंड देयर we are not able to do anything about it because उसके अंदर अगर आप इवन कोई फैसिलिटी भी दे दें in terms of giving ट्रैफिक का तो कुछ नहीं कर सकते. As regards the office based people, कोविड से जो अच्छी चीज़ें निकली हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट भी की हैं. So we came up with a agile working policy, which actually allows flexi timing. Which actually allows people to sometimes work from home, which actually allows people to work from different locations. So for example, किसी दिन शहर में बहुत रश है और किसी दिन चुंदरी के रोड पे कोई और इशू हो रहा है and you have to come to office or work, और घर पे आप वो अगर efficiency नहीं दे पा रहे हैं, so you can come to any office in our in the whole city. काफी सारे दफातर हैं हमारे. Okay. And you can अगर आप उसको काम कर सकते हैं, आप shared जगह है उसके ऊपर आप बैठे हैं, लॉग इन करें और काम करें. So and this remains only between the person and his or her line manager. So उसमें कोई लंबा चौड़ा अप्रूवल प्रोसेस भी इन्वॉल्व नहीं है, whereby HR or a senior guy has to be involved for approval. So if so it's basically an understanding between the person and his or her line manager. So that makes it really flexible and practical. Yes, organization level पे क्योंकि बड़ी organization है, service based organization है, so compulsorily we do not operate a mandatory work from home. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया अभी, बट आई पर्सनली फील दैट वी वर राइट इन नॉट जंपिंग ऑन द बैंड वैगन. वी हैव केप्ट इट फ्लेक्सिबल, सो देयर आर फ्यू डिपार्टमेंट्स हु डू इट, देयर आर फ्यू डिपार्टमेंट्स हु डू नॉट डू इट. सो एंड द पॉलिसी अलाउज डिफरेंट वेज to allow a flexibility to different people in the organization. Okay. अच्छा, इसमें फिर जो है वो again do you think कि the employee can get that perfect environment? अगर हम उसकी बात करें, देखा जाता है कि यार एक घर पे बैठ के जो काम हो सकता है
how productive people or the workforce is when they are sitting at home and they are working from home versus the people coming to the office और एक proper environment के अंदर काम कर रहे हैं, वो फैक्टर ज़्यादा एलिमेंट होता है कि इन्वायरमेंट वाला है, वो जो एक कम्यूट से बच के 1-1.5 घंटे की जो मेहनत और मुशक्क़त के साथ आ रहे हैं, वो एक चीज़ फैक्टर आती है कि वो एम्प्लॉई फ्रेश ज़्यादा होते हैं कि घर पे बैठ के काम करें, या वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि आप आके ऑफिस में काम कर रहे हैं? देखिए इसमें अभी जो रिसेंट चीज़ें डिस्कस भी हो रही हैं वर्ल्ड वाइड कि देयर इज़ नो सिंगल वे ऑफ डूइंग इट, लाइक 100% रिमोट वर्क भी नहीं चलता और 100% फिजिकल भी नहीं चलता, हाइब्रिड इज़ द वे फॉरवर्ड, एंड आई ऑल्सो एग्री. And not only because worldwide it is being discussed as a good practice, I've actually experienced it that sometimes you are better off working from home, and sometimes a personal interaction is also required. Okay. So we are still, I would say, human. We still have feelings. I am not sure आगे ऐसा रहेगा नहीं रहेगा, because जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, but since we are still human, since we still have feelings, जब तक we will not be able to survive or be a good society or be a good corporate unless we interact. Okay. So, and there are a number of things I've seen which get complicated when the personal interaction and connection is not there. Okay, yes. So it is always good to have a hybrid kind of a model whereby people have the flexibility to work remotely, as well as, I would say, flexibility to interact with their colleagues working in different functions. And this is something which will keep us, I would say, more motivated and connected as well. Because what the world saw is that while we were under COVID and we were keeping ourselves away from everyone, precautions ले रहे थे, but we missed the human connection. तो एकदम से जब वो restriction ख़त्म हुई, so everything just erupted. Yes. Like travel erupted. खाने पीने की जगहों पे दोबारा से रश हो गया. बिल्कुल. More restaurants came up, and so on and so forth. So I personally feel कि ये जो हुआ वो natural था. Because we are still, as I say, humans. हाँ, as a पाकिस्तानी नेशन, जो कि एक बड़ी एक अब मैं इसको अगर आम अल्फाज में बात करूँ, we are considered not as professional as the western world is, and we are considered कि एक professional ethics और वो बड़े कम पाए जाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की बड़ी कमी है. हाउ डू यू थिंक कि हमने कोविड के अंदर ये जो चैलेंज आया था हाइब्रिड वर्क का, या उस टाइम पे तो चले पूरा रिमोट वर्क की तरफ भी चला गया था, हाउ वेल वी हैव इवॉल्व्ड एज अ नेशन, एज ए ओवरऑल सोसाइटी इस हाइब्रिड सिस्टम की तरफ? देखिए गैप्स हैं, एंड गैप्स आर मेनली बिकॉज we are not very clean or straightforward in terms of our deliverables. We are not very specific about it. So ये एक चैलेंज है, और ये चैलेंज रहेगा जब तक हम अपनी आपस की डीलिंग्स जो है वो ठीक नहीं कर लेते. एंड दिस इज़ नॉट कॉर्पोरेट स्पेसिफिक, दिस इज़ समथिंग वी एज अ सोसाइटी बिहेव. लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम मैं बहुत ज़्यादा ब्लेम भी नहीं करना चाहता अपनी सोसाइटी को या द वे वी लिव आवर लाइव्स, बिकॉज जब आप थोड़ा बहुत लिटरेचर देखें पाकिस्तान से बाहर का, तो आपको लगता है कि ये तो हमारी सोसाइटी की बात हो रही है. तो इस तरह के मसाइल क्या यूएस में नहीं है, क्या यूके में नहीं है, क्या यूरोप में नहीं है? तो हमें पढ़ के अंदाज़ा होगा कि ये सारे मसाइल वहाँ पे भी हैं. कि जब आप बहुत ज़्यादा रिमोट वर्क की तरफ चले जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी, deliverables may get affected because so if there is not a proper system around it. So I personally feel कि ज़्यादा स्ट्रक्चर और ज़्यादा सिस्टमेटिक होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट्स को, instead of putting the blame on the people. So यही लोग अगर किसी
हमारे ही वाले लोग किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे मशहूर है, तो वहाँ तो बिहेव करते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि सिस्टम अवेलेबल है तो पॉलिसीज हैं एंड उनको ये भी पता है कि this is what I am expected to deliver, and if I am not able to do it, then this is going to be the consequences or repercussions. Okay. So if that is clear from the word go, then I don't think people like go in disarray or not behave properly. They behave. Okay. अच्छा, इसमें फिर आई विल कनेक्ट, हमने बहुत सारी उस पर बात कर दी अगेन, एम्प्लॉई के हिसाब से तो हमने बात कर ली, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर साइड. It was, I think, back in 2016 when I did my last job, before I, moved to the corporate entrepreneurial side. That one thing that irritated me the most of my boss, यार तू जीन्स नहीं पहन, तू टी शर्ट नहीं पहन कर आ, तू प्रॉपर जो है वो अपना जो है वो सूट वाले जो है वो कपड़े पहन के आओ, फॉर्मल लग के आओ, जो है शूज़ क्यों जो है वो कंफर्टेबल वाले पहने हुए, जॉगर टाइप, आप प्रॉपर जो है फॉर्मल शूज़ पहन कर आए, फिर आप ऐसे बैठो कि वैसे बैठो. Do you really think that is important in order to get that productive side of the employee, या फिर जो है वो ये बस अब एक नॉर्म्स हैं जो अब शायद चेंज हो गए. अब मैं 7-8 साल से तो ऑब्वियसली काम नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव पर्सनली अडॉप्टेड दैट. आई नेवर गेट इनटू हाँ अब चड्डा पहन के नहीं आ जाओ यार, यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के तो आप नहीं आ सकते हो, बट अगेन यू शुड हैव दैट डिसेंट कपड़े हैं तो जॉगर्स भी हैं, जीन्स भी हैं, तो इट्स ओके. I have personally implemented that, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मेरी बॉस की खामियां थी वो मैं यहाँ पे ना पूरा करूँ. तो do you really think that is important, या फिर इसमें ये सिर्फ एक नॉर्म्स हैं जो बस चलते आ रहे हैं तो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, या it is good for the corporate side, मतलब अपना company side, organization side? I would say these were corporate norms and changing very fast. And especially corporates like KE are adopting very fast. Or from a dress code perspective, you only have to wear formal if you are customer facing or if you are into some formal meetings. Other than that, the dress code is business casual. हाँ, कुछ ऐसी jobs हैं जो field jobs हैं जहाँ पे आपको uniform पहनना है, पहनना है. Obvious case है, हाँ, डॉक्टर तो lab coat पहनेगा ही. There are reasons to it, but other than that, it's business casual. और Fridays especially even the jeans are allowed. So again मैं यही कहूँगा कि ये भी एक hybrid kind of mechanism है, because my father, where you can feel comfortable throughout the week in the attire you want to wear, and not very rigid and specific कि अब यही होगा तो you can come to the office, और नहीं होगा तो you cannot come. So we have gone flexible in terms of this as well. एक चीज़ और जो अब खैर I cannot show you the dress code right now, but that is also quite generic, because in these days you cannot be very suggestive as well. Yes. So we have kept it generic as well, to give our colleagues an idea what is expected out of them, and then there is enough flexibility as well कि ठीक है अपने आप को भी आपको कैरी करना है. You have to carry yourself well in a corporate. You have to brand yourself. Yes. तो वहाँ पे भी जो है वो there is an equal opportunity for them to look like how they want to. अच्छा, हम अपने फादर्स की बात करें, अपने वालिद साहब और इन सब के बैक इन 80s 90s, देयर यूज्ड टू बी दिस थिंग, इवन कि अगर अब किसी वालिदैन रिटायर भी हुए हैं तो दे हैव दिस सिंगल ऑर्गेनाइजेशन थिंग कि यार शुरू जिससे अप्लाई किया, जहाँ से पहला दिन काम किया, वहीं पे जाके रिटायरमेंट लिया हमने. दैट सिंगल. माई फादर वर्कड इंटायरली, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अलाइड बैंक में काम किया, एंड ही वाज वर्किंग टिल हिज रिटायरमेंट. पूरा फर्स्ट जॉब से लेकर लास्ट जॉब वही थी, एक ही जॉब की. एंड वी हैव सीन द करंट ट्रेंड चेंजिंग के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो अपने यूथ है हमारी खास तौर पे, दे आर क्विकली जो है उसको चेंज करते हैं, साल 2 साल बाद चेंज चेंज. तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें कुछ प्रायोरिटीज़ रहती हैं ज़्यादा अच्छी, एक रहते हैं कि आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रहो, व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम यू शुड स्पेंड इन वन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर जंपिंग इनटू अनदर, या ये इफेक्ट करती है चीज़ें? सो आई वुड से देख जनरेशन टू जनरेशन चेंज तो आएगा.
हम एज अ ह्यूमन रेस भी तो इवॉल्व कर रहे हैं, एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो राइज है, एंड वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन राइट नाउ. सो इतनी सारी चीज़ें हमें इम्पैक्ट कर रही हैं कि जिस ज़माने में one should stay true to one organization and grow there no matter how much time it takes. So वो अब साइकी भी बदल गई है. And we have seen it over the years. We have become impatient as well as human beings. तो उतना patient लोग नहीं हैं with the process, with the system. तो I personally feel that our own impatience is affecting our average lives in any organization. And from an advice perspective or from an experience perspective, I would say spending the whole life in an organization, that can be fine as well. Or if you are changing throughout, that is fine as well. But there are 2-3 important things that one should consider. One is that are you getting an opportunity to do different things after every 1 or 2 years, 3 years. So if that is happening, then if the organization is fine, nobody is forcing you to change. It should not be change for the sake of change. And on top, जो एक आजकल थोड़ा सा norm है, but I personally don't like it, that there are people who work on a project and when the project is finished, 6-7 महीने बाद गायब, they move away. But the real learning comes from once the project is finished or something big has finished, to see the impact or results and see what went right and what went wrong. And so half of the learning is from the project itself, and half of the learning is afterwards. Okay. I personally feel that people do not spend enough time in one job or a project that gives them the whole 360-degree view, because it's always good to face the failures as well. कि आपने कोई काम किया, खत्म हुआ तो हट गए, निकल गए, you moved on. But it's always good to face the music. It can be good music, it can be bad. It can be bad. And that will actually teach you more of what you did right during the process and what you did wrong. So that gives you a better perspective of how much time you should spend in any single but job again, or company. do you think that ये जो आजकल हमारी यूथ है, 6-7 महीने काम किया उसके बाद फिर स्विच कर दिया, फिर 6-7 महीने काम करके स्विच कर दिया, do you think that is one criteria that you look into the CVs while going after the CVs के यार ये कम से कम इतना अर्सा तो गुजारा हो, ये क्या हर 6-7 महीने बाद जॉब स्विच कर रहा है, या मिनिमम पीरियड देखते हैं नहीं? Previously employers were pretty stingy about it. बट सिंस अब एम्प्लॉयर्स को पता है कि हर दूसरा CV ऐसा ही आ रहा है, सो देन हाउ वुड यू गेट पीपल? सो एक ये बात है. अच्छा, दूसरा एक पर्सनल कॉन्सेप्ट है कि दैट व्हेन यू से टैलेंट, तो टैलेंट इज नॉट टैलेंट. सो एक्चुअल टैलेंट तो वो है जो कंपनी में सामने है, सो उसका आपने ख्याल रखना है. बट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव, द टैलेंट इज ऑल अराउंड यू एज वेल. सो अगर कोई भले से 2 या 3 साल भी आता है और कंपनी के लिए अच्छा काम करके चले जाता है, he or she moves on and he or she can create that impact, then one should be fine with, because the whole generation is behaving like that. So maybe it's good for you adopting to not to spend time on seeing through कि यार कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा, सही ये रुका क्यों नहीं, ये चला क्यों गया. ठीक. Spend more time in getting most out of them when they are with you. Okay. अच्छा, मैं इस पे ना अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ आता हूँ. आई हैव ये मैं तकरीबन पिछले 5-6 पॉडकास्ट से बोल रहा हूँ. आई हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको मैं बड़ा आजकल परस्यू कर रहा हूँ. पहले भी कर रहा था लेकिन अब ज़्यादा हो गया. आई हैव दिस वेरी स्ट्रेंज, लेकिन बड़ी एक मुझे ऑब्जेक्शन है हमारे आजकल की जनरेशन के साथ. दे आर वेरी टैलेंटेड, दे हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्किल सेट, लेकिन अगेन दे डोंट नो हाउ टू सेल योर सेल्फ.
पर्सनल ब्रांडिंग जो है, दे डोंट नो हाउ टू यूज द लिंक्डइन, दे डोंट नो सीवी किस तरीके से सेंड करनी है. ये जो एक पर्सनल ब्रांडिंग है, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं कि आपने अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, इफ यू आर मेकिंग सम प्रोडक्ट, इफ यू आर सर्विस मैन, आपको सर्विसेज है, तो वो एक जो सेल योर सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है, वो हमें क्यों नहीं आता एज अ नेशन, हमारी यूथ को क्यों नहीं आता. एंड अगेन इफ नॉट, तो फिर इस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम क्यों नहीं कर रही हैं. यू नो, मेरे साथ कल एक यूनिवर्सिटी के चांसलर बैठे हुए थे. ही सेड कि यूनिवर्सिटीज़ का काम नहीं है कि वो सॉफ्ट स्किल्स का है, दैट कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस. लेकिन अगेन you know, you can hire some professionals, you can ask some professionals to come, और आप आके जो है वो उनको ये चीज़ें सिखाएं. You know, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है. You should be पहली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आप पहली मीटिंग में तो कम से कम अपने इंप्रेशन को अच्छा रखें. तो हाउ डू यू सी दैट कि ये जो सेल योर सेल्फ का एक कॉन्सेप्ट है. देखिए, कोई भी चीज़ सीखे बगैर तो नहीं आती. तो अब ये फैसला करना पड़ेगा कि वो उस स्टूडेंट को या उस इंडिविजुअल को सिखाएगा कौन. मतलब ये कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है कि आपको रात आप सोए और सुबह आपने सीखी हुई होगी. तो एक बात तो तय है कि कोई भी चीज़ सीखे बगैर नहीं आएगी. अच्छा, अब जब सीखे बगैर नहीं आएगी तो अब ये तय होना बाकी है कि ये वाली स्किल सिखाएगा कौन. कॉर्पोरेट सिखाएंगी. आई पर्सनली फील दैट यस, अ फ्यू पीपल जो नॉर्मली हम एज ट्रेनीज वगैरह लेते हैं, तो उनको हम वो इन्वायरमेंट दे सकते हैं जहाँ पे दे कैन बिकम बेटर प्रोफेशनल्स. दे लर्न हाउ टू कैरी देमसेल्व्स एंड सेल देमसेल्व्स. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम ये काम कितनी कॉर्पोरेट्स कर रही हैं और करेंगी. सो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को ये काम शुरू करना पड़ेगा. और उसमें कसूर खाली यूनिवर्सिटीज़ का भी नहीं है. आज अगर मैं एनालाइज करूँ प्रोफेशनल्स एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि क्या उन्होंने इसके लिए कभी अपने आप को ऑफर किया है टू इंस्टीट्यूट्स के. मैं साल में महीने में एक दफ़ा या क्वार्टर में एक दफ़ा CSR समझ के चला जाऊँ, I'll be available for giving it back to the society. So something has to be done. Yes. Whereby people can, there is a connect between academia and the professions. और उसके लिए maybe some kind of a framework, because ये जो चीज़ें freelance type होती हैं या बड़ी कोई अनस्ट्रक्चर्ड होती है ना, उसका मेरे नज़दीक कभी कोई रिजल्ट निकलता नहीं है. तो मे बी सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क फ्रॉम द एट द HEC लेवल मे बी, और सम यूनिवर्सिटीज़ कैन वर्क टुगेदर एंड bring professionals on board. And I personally feel कि professionals are willing. ठीक है, टाइम आजकल किसके पास है, बट जब आप पर्पस क्लियर करेंगे, और समटाइम्स शायद पैसे भी देने पड़ेंगे. ठीक है, जब इतनी फीस बहुत सारे इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं, तो दे कैन टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, बिकॉज there may be individuals who want to do it free. There may be individuals who would say यार कि मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा कीमती है, and I don't want, and it's not free. So there has to be some kind of an effort. And at the end of the day, who would benefit? I personally feel that the universities will eventually benefit, because their students will be more marketable. But don't you think organizations will be getting more out of it, because के आपको एक बच्चा नहीं मिलेगा, आपको एक तैयार किस्म का जो है वो एक स्किल सेट, आपका एक एसेट मिलेगा. Yes, you are right. But उसमें एक मेरा पॉइंट ये होगा कि yes, better groomed people we will get. But at the same point in time, there are many things, I would say many things which you only learn on job. Okay. So उसके लिए तो फिर जैसे I can only give example of the CA profession, whereby you do your articleship, and it's actually not something you learn through your work, but you go to different organizations and see their way of working, meet their people, observe them, see their culture as well. So that is immense learning, I would say. And right now, especially I feel for engineers, because हमारे मुल्क में शायद जो सबसे कम काम हुआ है वो engineers की
ग्रोथ और उनकी ग्रोमिंग पे हुआ है. They are the best technical people around, and our country needs more and more engineers. ठीक है, उस लेवल की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई पाकिस्तान में, बट स्टिल कभी तो होगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग हैं. और इवन अगर एक्सपोर्ट भी होना हो तो बेटर ग्रूम्ड इंजीनियर्स विल फैच मोर मनी. सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का ही फ़ायदा है. तो वहाँ पे आई वुड से कि जो सबसे कम ग्रूमिंग पे पैसा या एफर्ट लगती है वो शायद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में लगती है. दैट इज़ माई परसेप्शन. और वहाँ पे देयर इज़ अ नीड कि कोई ऐसी चीज़ हो इन बिटवीन के एंड ऑब्वियसली वर्किंग विद कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि सीए में भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक अरेंजमेंट है, इसी सी में भी है जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं. तो वाई नॉट इंजीनियरिंग learning programs in corporates whereby there is a 3 to 6 months period at least whereby which is mandatory just like ACCA में या CA में होता है. सही. On the lines of articleship, maybe not a copy of it but to give decent flavor. Internship से मसला हल नहीं होता. At least 6 months long. 6 months. 6 हफ्ते की internship doesn't do कुछ भी नहीं होगा. तो 6 महीने की mandatory arrangement with corporates, and I personally feel that corporates would eventually adopt it. Internship तो सब कराते हैं. They won't mind bringing those people for another few months and give them the right practical experience. Okay. अच्छा, इसमें तो फिर how do you see the power of LinkedIn, which unfortunately we have seen कि हमारे यहाँ professionals doesn't take it very serious. और वो जो personal branding का भी एक element आता है, they don't think कि it is important या LinkedIn को इतना effectively use नहीं कर सकते. LinkedIn is such a world कि अगर आप वो उसकी properly उसको use करें, you can achieve many good things. My entire business is on the power of LinkedIn. Connecting new people, connecting people 7 समंदर पार आपके जो हैं वो उस पे बैठे हुए हैं. तो how do you see that power of LinkedIn? I've seen that you have been actively using it और काफ़ी माशाल्लाह आपके followers भी हैं. So how do you see that? देखिए, एक वजह तो लोग मुझे कहते हैं कि फॉलोअर्स ज़्यादा होने की है कि इलेक्ट्रिक में एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा है. So अच्छा, वैसे एक मैं बात पूछ रहा था. This is true to some extent. आपके रिश्तेदार तो नाराज़ नहीं होते कि इलेक्ट्रिक में काम करने से? नहीं, मेरे रिश्तेदार अब नाराज़ नहीं होते. अच्छा, अब नहीं होते. सही है. बल्कि मजबूरी पता है. हाँ, मजबूरी पता है. So इनफैक्ट ये भी एक फैक्ट है बिकॉज के इलेक्ट्रिक को बहुत सारे लोग आइसोलेटेड एक्सपीरियंसेस से जानते हैं. सही. बट मेरे जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने तो पूरी जर्नी देखी है. वो टाइम भी देखा है जब मैंने के ज्वाइन किया था 15-16 साल पहले, और वो टाइम भी देखा है जैसा कि अब है. तो उनको भी ये फील होता है कि यस देयर हैज़ बीन अ विजिबल चेंज. तो क्योंकि उनको पूरी जर्नी पता है, वो एक साइलोड एक्सपीरियंस नहीं है उनका या इंटरेक्शन नहीं है. So I feel more comfortable moving within the family and still associated with KE. दूसरा, जब बहुत सारी दफ़ा उनको आप ऐसी चीज़ें जो पब्लिक में पता नहीं है जो आप उनसे शेयर करते हैं, what KE is working on, then they feel more comfortable कि हाँ, this is not anymore public sector organization. बाकी डिस्कोर्स के मुकाबले में we are a world apart. And yes, there are challenges and we are working on it. हम आराम से नहीं बैठे हुए. So there are things which we are actively working on. Yes, external environment, political environment, other issues are never ending. But this doesn't mean that we stop. We are continually improving and doing our job. LinkedIn perspective से कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है. आई पर्सनली फील के एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट हर पोस्ट लगाने से पहले ये बंदा सोच ले कि तो वो जो है ना, एक फॉरवर्डेड या किसी की पोस्ट आगे कर देना, बहुत सारी सिंपलिस्टिक चीज़ें बच्चे करते हैं. बट आप ये सोचें कि लिंक्डइन पे कोई मेरा पोस्ट नहीं है, दिस इज़ मी. तो अगर आप कोई चीज़ फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, if it's you, then
and you remain true to this philosophy, एक ही one liner है मेरे पास तो, then at the end of the day you will slowly and gradually create your brand. अगर आप उसको confuse करेंगे, jumbled up करेंगे, Facebook या Instagram की तरह यूज़ करेंगे, तो फिर वो बन भी वैसे ही जाएगा. So it's a professional forum. It brings out good professional things about you. So work on that rather than jumping on every trend or jumping on everything around you happening on LinkedIn. किसी को देखा कि उसने ऐसा कुछ लगाया तो मैं वैसा लगा दूँ या मैं भी उस टॉपिक पे बात कर लूँ. अगर आपके अंदर से नहीं आ रही and you don't think that this you should reflect yourself, this resonates or reflects with you, then you don't do it. Maybe आपकी महीने की 2 पोस्ट कम ही लगेंगी, but do it for purpose. Okay. अच्छा, इसमें सर moving toward my last few questions, एक चीज़ है having a person who's skilled enough and having a person who has got the fancy degree from a very fancy institute. स्किल्ड वर्सेस डिग्री का जो ये एक बहस है जो हमारे मुल्क में काफ़ी अरसे से चली आ रही है, हाउ डू यू सी दैट इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन योर एक्सपीरियंस कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड बट डजंट हैव अ डिग्री, या फिर दोनों चीज़ें अल्टरनेटिवली साथ में चलती रहती हैं? अगर मैं जेनेरिकली बात करूँ ना, तो अ डिग्री जस्ट गेट्स यू इन द ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रेड on top of it, but your skills actually allow you to grow up the ladder or do different things in life. So ये तो एक generic है, but at the same point in time there are specialist jobs जहाँ पे degrees, certifications उनकी importance होती है, and you would agree more. Yes. तो simplistically yes, a degree gives you an entry to the organization, but your skills, softer as well as functional skills, take you farther. But there are specialist roles whereby you need to remain updated, keep yourself certified, educated to grow in the jobs. So कुछ चीज़ों में ये apply भी होता है, but mostly it's skill based. Okay, great. अच्छा, इसमें you think AI जो हम recent देख रहे हैं इसका, although AI बहुत अरसे से है western countries में, हम recently after ChatGPT we saw this debate of AI versus human jobs or human jobs चली जाएंगी. How do you see that impact of AI? और फिर उसको हम देखें कि jobs के हवाले से, do you think that AI will replace human beings, या again कि the person without AI will be replaced? देखिए, इसमें थोड़ी सी ना हम AI से थोड़ा हटके इसमें हमारी जो है ना वो सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़्यादा है. हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ थोड़े से मुनाफिक भी हैं. अच्छा. तो हम अक्सर बोलते हैं कि यार हम बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, बट ज़्यादातर काम ऑपरेशनल कर रहे होते हैं. तो AI ऑपरेशंस को रिप्लेस करेगा. आज नहीं करेगा, कल करेगा, कल नहीं करेगा, हफ्ता बाद करेगा, साल बाद करेगा. बट वॉट एवर ऑपरेशनल टास्क दैट ह्यूमंस डू, AI will inshallah have the capability to replace them, because इंसान के जहन से ही बन रही है ना कोई चीज़. तो इसका मतलब इंसान के जहन में इतनी कैपेबिलिटी है कि कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर दे जिससे मेरे ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म होने शुरू हो जाए. ऑटोमेशन तो बहुत अरसे से है, तो ये उसका नेक्स्ट लेवल ही है बेसिकली, AI और मशीन लर्निंग. तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब ये हो जाएगा तो क्या हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि फिर क्या हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए ह्यूमन इंटरेक्शंस के लिए? क्या हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए फ्यूचर पे सोचने के लिए? क्या हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए उन चीज़ों पे सोचने के लिए जिनके बारे में हम नहीं सोचते? क्या प्लानिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल जाएगा? क्या स्ट्रेटजिक थिंकिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल जाएगा? तो अगर मैं इस तरह से सोचूं, जो कि नॉर्मली मैं भी नहीं सोचता हूँ, ये हम सब बिजी होते हैं, तो अगर मैं इस तरह सोचूं, टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक लाइक दिस, देन the threat goes away. Okay. And the positive
thinking gets into play, whereby you can say that yes, I will have more time. बट अगेन ये डिबेट तब से नहीं चल रही है हमारे अब्बा अम्मा के दौरों से कि यार टाइपिस्ट था तो वो टाइपराइटर ने जो है वो कंप्यूटर आएगा तो टाइपराइटर की नौकरी चली जाएगी. बट सो एक एग्जांपल, सॉरी टू कट यू, बट एक एग्जांपल के सडनली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैव बिकम रेलेवेंट. सो कोई जॉब निकल जाएगी तो कोई जॉब आ भी रही है. So it's an evolving thing. It will ease the process. Yes. If you summarize. एक टाइम था जब उन लोगों को हम और मे बी शायद वो लोग सुने रेलेवेंट लोग तो मेरी बात को थोड़ा बुरा भी समझे, बट हम समझते थे ये साइकियाट्रिस्ट है और जो पागल हो जाता है वो उसके पास जाता है, ठीक है, या आउट ऑफ माइंड हो जाता है. बट अब कोविड के बाद उसकी थोड़ी सी जो है वो हैयत चेंज हो गई. वो मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट हो गया. ऑर्गेनाइजेशंस आर थिंकिंग अबाउट इट. It now, as I see it, the journey in the last 3-4 years, it is जो taboo था उसके साथ attached, that is going away. Okay. And people are thinking about it. कि yes, if somebody has any problems, so let's discuss them out. Okay. With a professional. And it's not something that आप पागल हो गए हैं या आप you are out of your mind, so ऐसा कर रहे हैं. There can be things happening in your brain because it's an organ as well. और उनको ठीक करने के लिए भी there are professionals. उनको शेयर करने के लिए भी there are people. So एकदम से बहुत सारे across the world वो professionals relevant हो गए हैं, उसमें certifications हो रही हैं. People are leaving jobs and adopting as consultants. So I think something will go and something will. You know that one thing I usually when I'm recording the podcast, I'm looking out also for the thumbnails और titles जो YouTube के ऊपर जाएंगे. तो one very interesting thing, that word जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है continuously, is the whole conversation with you is, you know, summarize अगर उसको करें एक word में, is evolve yourself. Evolution जो आपकी होती है, it is very important, you know, to constantly अपने आप को change करना. We have seen companies shutting down just because they don't adopt this change or evolve नहीं किया. तो that's very good. अच्छा, very last question regarding this all process. How important you think it is to, you know, build a team? You know, team building का एक जो एक factor है. I'm not sure, but obviously you are on the top of the position, you know, to HR के वाले से. You might not be interacting with the teams constantly, आपके नहीं होते, लेकिन again you will have HR की team होगी जो आपके अंडर आती होगी. How important do you think, and how that picking element एक leadership के लिए, एक leader, how do you see कि यार ये बंदा ऐसा है who might replace me next, या एक leader बन सकता है, तो how do you see that? So if I try to summarize it, in my view, and obviously इस पे बहुत सारी बात होती है leadership पे. So अगर आप मेरे से पूछेंगे तो leadership is about trust. Yes, and a leader is somebody people trust. But the bigger question is how do you win trust? तो मेरी अपनी जो experience है या जो मेरी professional journey है, उसमें 2-3 चीज़ें आई हैव सीन आर इम्पॉर्टेंट. एंड आई ऑल्सो रिमाइंड माई सेल्फ, बिकॉज जब आप काम में बिजी होते हैं तो यू टेंड टू इग्नोर दोज थिंग्स. बट इफ आई वुड पॉइंट आउट 2-3 थिंग्स that allows you to win trust and make you a good leader, और this is not department specific, आप कहीं भी हो सकते हैं, this is not corporate specific. So I would say respect. I would say communication and transparency. So if these 3 things are there, then I personally feel that you can be a good leader. And what about the team building? How important it is to, you know, have that. So that's how you build your team. You build your team around communication. And in communication, as they say, more is less. You remain transparent with them, even if something they are not happy with, but you have to tell them.
Okay. And at the end of the day, respect. You have to treat your team with respect. Okay. And the reason I didn't ask it earlier because I wanted to एक सारा प्रोसेस समझे, लोगों को पता हो ये क्या प्रोसेस है, एंड देन आई आस्क के हाउ मेनी पीपल यू आर मैनेजिंग राइट नाउ, फ्लीट फोर्स जो आपकी है, हाउ मेनी वर्क फोर्स आपके अंडर जो काम कर रही है इन द होल ऑर्गेनाइजेशन यू आर लुकिंग आफ्टर. So directly 5 people report to me. HR is a 100 people team, and KE is a 12,000 people company. Okay, so that experience is coming out of 12,000 people. He's managing it, so it's a well. इसको हम देखें तो experience उस पे है. अच्छा, very last message that you would like to give to the students who are entering into their professional life, making their resume, getting into internship, trainee programs. Any one message that you would like to give to them? So I've been seeing people coming through or different generations. घर में भी है. I have teenager kids. So what one thing is to be advised to them, and obviously we can only advise, can't force them now anymore. Yes. और मेरे ख्याल से ये भी सही है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन फ़र्क आता है. बिल्कुल आता है, बिल्कुल. तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप इस जनरेशन को बहुत सारा फोर्स करें, क्योंकि ये वो जनरेशन है, पहले इट वाज ओनली टॉप डाउन, जब नई जनरेशन आपसे सीख रही होती थी. बट अब क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इट्स अ टू वे प्रोसेस नाउ. अब यू आर लर्निंग एज मच फ्रॉम द न्यू जनरेशन, so you cannot be forcing things on them. You can only be advisory. And there are two things which I see they should work more on. One thing is patience. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ उनको ज़रूरत नहीं है, ये हम सबको ज़रूरत है, मुझे भी है और पुरानी जनरेशन को भी है, because as a society we have become impatient. Because if you don't remain patient with the process and what you believe in, then you cannot evolve. You will frustrate yourself, and you will change gears, you will change courses, and you will not reach your destination. Okay. And the other thing I would say is consistency. So throughout the process, if you are not consistent enough, वो आपको खुद ही पता चल जाता है कि यार आप बहुत ब्लिप करते हैं, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे. So that affects you as a professional. So remain consistent. And be patient with the process and what you believe in. So one day you will achieve it. And at the end of the day, one thing is very close to my heart. कि as a Muslim, वो जो है ना, मंजिल is not something जो हमसे desired है. Yes. हमसे desired तो कोशिश और जद्दोजहद है. तो don't get frustrated by the fact that वो चीज़ नहीं मिली, वहाँ नहीं पहुँचा. This is actually not desired from us. Okay. The process is important. Yes. और process के दौरान बहुत सारी successes से अल्लाह ताला नवाजते हैं. बिल्कुल. Process के दौरान बहुत सारी दुनियावी चीज़ें भी हमें देते हैं, जिसमें पैसा भी शामिल है. So उसको आप चेरिश करें. Yes. और वहाँ भी पहुँचना होगा तो पहुँच जाएंगे, if your life and time allows. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. It was a very wonderful experience to have you and to learn from you about the HR fraternity. और उसमें जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और I'm sure viewers को मिला होगा. Thank you so much. We are trying to build a professional case studies and business case studies for you. And if you're liking it, please do subscribe the channel. Instagram और Facebook के ऊपर हमारे short questions आते हैं जो गेस्ट की तरफ से होते हैं. You can follow it there. कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा हाउ डू यू फाइंड इट, और क्या चीज़ें आप नेक्स्ट जो है वो सुनना चाह रहे हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.